स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे जो साइन रूल, साइन फार्मूला या फिर लॉ ऑफ साइंस होगा। ये ट्रायंगल है अपने पास एबीसी, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टिसेस ए, बी एंड सी। वर्टेक्स बी के अपोजिट जो साइड है एसी, उसकी लेंथ स्मॉल बी हमने मेजर करी। वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड बीसी, तो इस साइड की जो लेंथ मेजर करी वो हमने स्मॉल ए। वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड ए बी, इसकी लेंथ हमने मेजर करी स्मॉल सी। देन एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों एंगल का जो साइन है और जो करस्पॉन्डिंग साइड लेंथ है अपोजिट, वो प्रोपोर्शनल होते हैं। साइन ए बट्टा ए बराबर साइन बी बट्टा बी बराबर साइन सी बट्टा सी। इस चीज को प्रूफ करेंगे केस 1, केस सेकंड और केस थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जिसमें एक एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल होगा। दूसरा जो केस होगा उसमें राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल होगा। तीनों केस को हम लोग समझेंगे। केस फर्स्ट, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है ए बी सी। वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एडी, नाउ एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। एंगल बी साइन बी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एडी, हाइपोटेनस एबी। इसकी साइड लेंथ एसी की स्मॉल बी, बीसी की साइड लेंथ स्मॉल ए के अपोजिट साइड है तो स्मॉल ए मेजर करी, और एंगल सी की अपोजिट साइड ए बी, इसकी लेंथ स्मॉल सी। साइन बी इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर एडी अपॉन हाइपोटेनस इस, ये ए बी सी है, तो क्या इसके जगह मैं सी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। एडी ऐसे ही छोड़ देते हैं, साइन बी, सी साइन बी इक्वल्स एडी, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये साइन of angle C
इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस AD अपॉन हाइपोटेनस AC इक्वल्स B, then B sin C equals AD. Equation second. Now from equation 1 and 2 we get C sin B equals B sin C. This implies sin B upon B equals sin C upon C. Now ट्रायंगल ABC में जो साइड BC थी इस पे सामने वाले जो वर्टेक्स A थे उनसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था AD। अब क्या करते हैं, जो साइड AC है या फिर AB है इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इसके सामने वर्टेक्स से A B C। अब हम AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। देन ट्रायंगल BDA एंड ट्रायंगल BDC in triangle BDA राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ए हम निकालें, साइन ऑफ एंगल ए, तो साइन ऑफ एंगल ए कितना होगा, यहां लिख लूं, ये 90 डिग्री है, इसके सामने ए बी हाइपोटेनस हो गया, एंगल ए, तो एडी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बीडी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बीडी अपॉन ए बी, बीडी एज इट इज उतर गया, और जो ए बी है, ए बी की लेंथ कितनी है, स्मॉल सी इक्वल्स साइन ए, कुछ ऐसा। बीडी अगर हम यहां से निकालें तो सी साइन ए इक्वल्स बीडी। नाउ इक्वेशन थर्ड कर देता हूं इसको, अगेन इन ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल है BDC, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री की सामने BC हाइपोटेनस, और एंगल C अगर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, BD परपेंडिकुलर है,
sine of angle C equals perpendicular upon hypotenuse BD upon hypotenuse BC. BC measures a small length, a small a. Then equation 3 and 4 BD right hand में equals, then 3 and 4 A sin C equals C sin A. Sin C upon a small c, sin A upon a small a. Now from this and this, we clear it, then we get sin C upon sin C, sin C upon C, sin C upon C, sin C upon C. ये दोनों टर्म आपस में बराबर है और ये कह रहा है कि ये sin B अपॉन B और sin A अपॉन A के बराबर है, स्मॉल a के. तो हम क्या लिख सकते हैं? 10 sin A upon A equals sin B upon B equals sin C upon C. This proves the result in acute angled triangle. Now, case second. Right angled triangle. Now sine of angle A. Sine of angle A, then AC is base, BC is perpendicular and AB is hypotenuse. In this condition, we write sine of A equals perpendicular upon hypotenuse, BC upon AB. BC measures a small a, AB measures a small c, then C of sine A equals a small a.
or sine A upon A small equals 1 upon C. Now, sine of angle B equals in right angled triangle ACB, in which sine of angle B equals perpendicular AC upon hypotenuse AB. AC measures a small b, AB measures a small c. Sine of angle B. Now, sine of angle B upon B equals 1 upon C. Equation first, equation second. From equation first and second, we get right hand of both the equations 1 and second are equals. In this condition, left hand side of equation first and second also be equals. Then sine of angle A upon a small a equals sine of angle B upon a small b. Sine of angle C. Now, sine of angle C. As we know, angle C measures 90 degree. Then sine 90 degree equals 1. Sine C. If we divide both the sides by a small c, sine C upon a small c equals 1 upon a small c. Equation third. If we compare equation first, second and third, then we get right hand of equation first, equation second and equation third equals 1 upon c. Then left hand side of equation first, second and third are also equals. Hence, sine of angle A upon a small a equals sine of angle B upon a small b equals sine of angle C upon a small c. This proves the result. In right angled triangle.
from equation first, second and third. Case third. In case third, we consider a obtuse angled triangle. A, B and C. From C, we draw a perpendicular on AB. In triangle ABC, two right angled triangle ADC and BDC. In triangle ADC, sine of angle A perpendicular upon hypotenuse DC, hypotenuse AC. AC measures a small b. Now B's sine angle A equals DC. Equation first. In triangle BDC, which is right angled triangle, sine of angle B equals DC upon BC. DC, which is perpendicular, and hypotenuse, which is BC. BC measures a small a. Then sine B equals DC upon a small a. This written as A sine B equals DC, which is equation second. Now from equation first and second, we get B sine A equals A sine B. Sine A upon a small a equals sine B upon a small b. Now from C we draw a perpendicular on AB. In this case, change this case into such as BC, in which BC is extended. On extended part of BC, we draw a perpendicular to point A. This point measures D. Now, if this angle is C, then this angle measures 180 degree minus angle C.
in triangle ABC having base BC and perpendicular AD, then sine of angle B equals perpendicular, which is AD, upon hypotenuse, which is AB. AB measures a small c. Sine B equals AD upon AB, a small c. Then C sine B equals AD. And in triangle ACD, sine of angle 180 degree minus C which is equals perpendicular AD and hypotenuse AC in the ratio AD upon AC. You know that sine 180 degree minus C equals sine C. AD AC, which is a small b, then a small b sine C equals AD. If we consider equation 3rd and equation 4, in equation 3rd and 4, right hand parts are equal, then left hand part also be equals. C sine B equals B sine C. Hence, sine of angle B upon B equals sine of angle C upon C. Now from consider these parts and these parts. We guess that sine A by A equals sine B by B equals sine C by C. Hence, this results is proved. Sine A upon a small a, sine B upon a small b equals sine C upon a small c. This is the results which have to prove. Thank you so much.